and here is a lecture for you. This lecture today to deal with natural wonders. So the first wonder is the sky appears blue. Region a scattering of light. But remember, there are two kinds of a scattering, right? Two types of a scattering of light. One is your Raleigh scattering, and second one is your Raman scattering. First one is the Raleigh scattering, and Raleigh scattering is called classical scattering. Classical scattering, right? अब मैं बता दूं कि ये जो आकाश नीला है, इट्स बिकॉज ऑफ द Raleigh scattering, classical scattering, not because of the Raman scattering. Classical scattering is the elastic scattering, and Raman scattering is the inelastic scattering. To remember, so this is the Raleigh scattering, and this scattering is responsible for the blue color of sky, and the blue color of sky, right? It says Raleigh scattering क्या बताता है ये कि scattering is inversely proportional to fourth power of wavelength of light. What is this? Lambda here is your wavelength. लैम्डा आपका तरंग लंबाई है. जैसे जैसे वेवलेंथ का मान बढ़ेगा स्कैटरिंग का मान घटेगा. अगर हम सोलर रेडिएशन की हम बात करें तो विवगेओर, दिस इज द विजिबल पार्ट, दिस इज द विजिबल पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन. इसमें आप देखेंगे क्या कि विवगेओर में लैम्डा का मान इंक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लैम्डा इंक्रीजेज मीन्स lambda is lambda violet minimum, and now this lambda red maximum. Then what will happen? A scattering for, say, a scattering violet will be much greater than that of a scattering for रेड. यानी कहने का अर्थ हो कि वायलेट कलर का स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होगा रेड की अपेक्षा. लेकिन मैं बता दूं कि इसलिए आकाश को वायलेट दिखना चाहिए, लेकिन वायलेट कलर इज़ लिस्ट सेंसिटिव टू आई. और ये भी बता दूं कि जैसे से हम बढ़ेंगे वायलेट से रेड तरफ, वैसे से वेवलेंथ का मान बढ़ेगा, साथ ही साथ वेवलेंथ डिफरेंस का मान ही बढ़ेगा. मतलब क्या हुआ कि वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, वायलेट इंडिगो
और फिर इंडिगो ब्लू, इनके बीच में चूँकि वेवलेंथ है, लेकिन वायलेट का सबसे अधिक होगा, लेकिन आई इज़ least sensitive to violet color, that's why the sky appears to be blue. तो जवाब आपका क्या होगा? The sky is blue due to classical scattering or the Rayleigh scattering, which states that scattering of light is inversely proportional to fourth power of a wavelength, right? A scattering means just to strike the two particles. One is the particle of light called quantum, and another is called the medium particles. Particles in the medium, माध्यम के में जो कण होंगे. अब इसके लिए शर्त ये है क्लासिकल स्कैटरिंग के लिए, रिमेंबर, इसे ए यहाँ पे क्या है? डायमेंशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल, जिससे प्रकाश किरणें स्कैटर होंगी. डायमेंशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल इज मच लेस दैन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओनली देन द क्लासिकल स्कैटरिंग विल टेक प्लेस, राइट. याद रखेंगे हमेशा कि ए साइज ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स शुड बी मच लेस दैन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट. रिमेंबर, बहुत कम होना चाहिए. यदि इन केस ये बड़ा हो गया, A is much greater than that of the wavelength of light, वैसे सिस्टम क्या होगा? All colors will be uniformly scattered, and that's why clouds जो होते हैं वो appear white. क्योंकि clouds में क्या होते हैं कि big water droplets होते हैं, ice भी होते हैं, इसलिए clouds white दिखते हैं, and all the colors are almost equally scattered because the size of the cloud particles is much more than that of the wavelength of a light, right? Second phenomenon, it is the rainbow is formed by rainbow formation. Reason, dispersion of light, refraction of light, reflection of light, ये कई बार बीपीएससी पूछे भी गए हैं. तो रेनबो जो फॉर्म करता है, इट इज़ ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. याद रखेंगे. रेनबो के साथ क्या है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेनबो. से the rainbow primary and secondary, right? दोनों के रीजन्स एक ही होंगे. डिफरेंस क्या है? अंडरस्टैंड. दिस प्राइमरी रेनबो इज 3 steps process, राइट. ये 3 स्टेप्स प्रोसेस में होते हैं. 1 रिफ्रैक्शन, 2 2 डिफ्रैक्शन होंगे इसमें, रिफ्रैक्शन 2, रिफ्लेक्शन 1. क्लियर? दिस हैपेंस इन केस ऑफ प्राइमरी रेनबो. साथ ही साथ ये विवियोर और रेनबो में आप देखेंगे क्या कि जस्ट आफ्टर द रेन, वर्षा के बाद क्या होगा? 7 रंगों की पट्टी आपको दिखाई देगी.
और 7 रंगों की पट्टी जब दिखाई देगी जस्ट आफ्टर द रेन, और अगर आकाश के आगे वाले भाग में अगर इफ़ यू सी द 7 कलर्स, ए पैटर्न ऑफ 7 कलर्स, ए डिस्प्ले ऑफ 7 कलर्स, जस्ट अपोजिट जो आकाश का पोजिशन होगा वहाँ पर सूर्य रहेंगे. दैट इज यू शुड बैक द सन, राइट, और फेस द स्काई. अब क्या है हमारा, अगर ऐसा हम करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शे 3 steps process and now Bhibgyor. Here what will happen if you get the pattern of 7 colors, right, this way, arc, say this is here red and this is violet, in between there is yellow. This happens in case of primary rainbow, right, whereas reverse is the case in case of secondary rainbow. Secondary जो रेनबो होगा, सेकेंडरी रेनबो, उसमें रिवर्स केस हो जाएगा. रिवर्स इज द केस विथ सेकेंडरी रेनबो. सेकेंडरी रेनबो जस्ट उल्टा हो जाएगा. सेकेंडरी रेनबो क्या उल्टा होगा, सेकेंडरी में वाइट ऊपर चला जाएगा, रेड सबसे नीचे हो जाएगा, याद रखेंगे. एंड अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इन केस सेकेंडरी रेनबो, this is 4 steps process. 4 steps process. 4 स्टेप में होंगे, इसमें होंगे रिफ्रैक्शन 2 एंड प्लस रिफ्लेक्शन 2, राइट. वंस अगेन रिपीट मैं करता हूँ कि रेनबो क्या है, जस्ट आफ्टर द रेन देयर इज ए कलर डिस्प्ले in the sky, 7 colors. This color display is called rainbow. It is caused by the combined impact of dispersion, refraction and reflection of light. Rainbow is of 2 types, on the primary and another one the secondary. Primary rainbow, in primary rainbow is the 3-stage process, that is 2 refractions, 1 reflection, and now at the top there will be the red color and at the bottom there will be the violet color. Whereas then secondary rainbow is a 4 steps process. Now 2 diffraction and 2 reflection. Whereas there will be the reverse order of the colors, that is violet will be top and red will be the bottom, right. Now you can see the diagram here, आप यहाँ देख सकते हैं. It's better just to make the points clear. आप देख लो इसको. ये here what happens, the first diagram is your so called the primary rainbow. This is the primary rainbow. Primary rainbow, right, and second one is the secondary rainbow. Secondary rainbow. The first one is the mechanism of the primary rainbow. This is raindrop. आप देख लें. Sunlight enters. One reflection, one refraction, 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 and one reflection. Shimmer is the second case, you can see it to make the points clear. All right, fine. Now next come to diamond science Y region. Region total internal reflection, total internal reflection, right, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, right, और what is पूर्ण for total internal reflection. Now
द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. रिमेंबर, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, सी क्रिटिकल एंगल. रिमेंबर, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, सी क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण. तो याद रखेंगे कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम. सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाए, जिस शीशा से हवा में, ये पहली शर्त है. दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट एक्सीड द क्रिटिकल एंगल, ज़्यादा होना चाहिए. दो. अगर हम डायमंड की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड म्यू इज 2.42. इसका वर्तमान का मान जो होता है 2.42 होता है. एंड क्रिटिकल एंगल इज 24.41. ए क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, कम है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी लार्ज, याद रखेंगे. तो अगर आपके आएंगे एग्जाम में कि डायमंड क्यों चमकता है, आंसर मस्ट बी ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नंबर 1 क्यों होता है? बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42 एंड क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल 24.41. दो कारणों से देयर इज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, इंटरनल रिफ्रैक्शंस, और this gives the brilliance of the diamond, right? You can see this explains the total internal reflection. ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन को एक्सप्लेन करता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन को एक्सप्लेन कर रही है. आप देख लें, जैसे आप देख रहे हैं कि ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, प्रकाश की डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है. और आप देख रहे हैं कि एक जो यहाँ पे एक खास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, उसके लिए क्या होता है, प्रकाश किरण उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है. दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट. ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मच, आई मस्ट बी ग्रेटर देन सी. आई का मान सी से ज़्यादा होना चाहिए, वेयर सी स्टैंड्स फॉर द क्रिटिकल एंगल. The sun appears red at sunset and sunrise. Why? Reason, a scattering of light, a scattering of light, of course Rayleigh scattering, or Rayleigh scattering also called classical scattering. इसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर. फिर वही बात होगी भिप की ओर, ये लेमडा भी मिनिमम एंड लेमडा आर मैक्सिमम सबसे अधिक होगा. नतीजा क्या होगा? स्कैटरिंग, इसका स्कैटरिंग सबसे अधिक, मैक्सिमम वायलेट का स्कैटरिंग, वायलेट का मैक्सिमम, और इस रेड कलर का स्कैटरिंग मिनिमम. पर होता क्या है कि जब सनसेट सनराइज के समय होता, देन द सन रेज हैव टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस, काफ़ी अधिक दूरी तय करनी होती है. जब हमारे सिर के ऊपर प्रकाश सूर्य रहते हैं और जब क्षितिज पे रहते हैं तो
सूर्यास्त के समय लाइट रेज विल हैव टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस। नतीजा क्या होता है कि जो भी वाइट, इंडिगो, ब्लू है, दीज आर स्कैटर्ड मोर एंड दे गेट डिफ्यूज इन द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल। और चूँकि लाल रंग का स्कैटरिंग कम रहता है, इस लाल रंग होते हैं और सूर्य के आसपास ही रहते हैं, एंड दैट्स वाई रेड कलर डायरेक्टली रीचेज अस एंड वी सी द सनसेट एंड सनराइज in the ray, right? See here, this expands further. Now, this is the so-called the time of the sunset or sunrise, right? The sun is at the horizon, क्षितिज पर होते हैं, and we are the observer. और यहाँ पे अगर सूर्य रहते हैं overhead, तो sun has to travel less. सन रेज हैव टू ट्रैवल रेज, जो सूर्य की किरणें होती है उनको कम दूरी तय करनी पड़ती है। व्हेन देयर इज हियर इज अ सन नियर द होरिजन, देन द रेज फ्रॉम द सन, रेडिएशन फ्रॉम द सन विल हैव टू ट्रैवल अ मोर डिस्टेंस, एंड सो द रेस्ट ऑफ द कलर्स गेट डिफ्यूज इन द एनवायरनमेंट, एंड रेड कलर बीइंग लीस्ट स्कैटर्ड विल रीच directly to us, and so there is a red appearance of the sun at the sunset and sunrise. Next one come, concave mirror is used as a sign of as a saving purpose. Region, right? Say ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, जो भी वस्तु को हम रखते हैं वह क्या है, इन बिटवीन P and F. P means pole, P stands for the pole, F stands for the focus. When you place any object between the pole and the focus, right, the image V will be behind the mirror, mirror के पीछे, behind the mirror, magnified बड़ा होगा, erect सीधा होगा। यानी when you place any object before the concave mirror, in between the pole and the focus of the mirror, the image of the object formed is erect, magnified and behind the mirror. यानी अवतल दर्पण के सामने अगर उसके फोकस और ध्रुव के बीच किसी वस्तु को आप रखेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित दर्पण के पीछे और सीधा बनता है। दिस इज रीजन behind the use of concave mirror for a saving purpose. You can see the diagram here, right? These are concave mirror. Concave mirror, see here. This is your pole P. This is F, see here, F focus. AB, this one is your object, AB vastu, object, and now this ADS piece is the image, प्रतिबिंब। What do you find? हम लोग पाते हैं कि AB से दो प्रकाश किरणें चलती है, एक दिस वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और चूँकि कोई भी प्रकाश किरण अगर प्रधान अक्ष के समानांतर होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से गुजरती है, इसलिए फोकस से आगे एफ से गुजरी। और नेक्स्ट जो रे हमने लिया है वो क्या, ये पोल से गुजरता है, और पोल से जब किरणें जाती है ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये दोनों किरणों को पीछे को बढ़ाया गया, दिस वन एंड दिस वन, दे कट ईच अदर एट द पॉइंट A dash, एंड सो दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB प्लेस्ड बिटवीन so called P and F is A dash B dash, which is a bigger, magnified, erect and behind the mirror, right? So that is the reason why concave mirror may be used as a saving mirror. That's all for the day. Thank you.